Congress, the Lok Sabha MPs of this morning. Lok Sabha. After the election, you were shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. What is the institution? You destroyed all the institution in this country. Some BJP member, they became the Human Rights Commission member and they submitted their report. Totally wrong. It is a pre-poll, it is not post-poll. And all the nationwide, the people must know it, that how West Bengal suffered this time. In my election, I have seen from officer in charge to returning officer, observer to SP, all are changed. Only BJP has got the election commission blessing, just election commission office. I do not know how they are pressurized. They became just like a BJP party office. The democracy is in dangerous situation, I am telling all of you. I do not know what will happen in 24. But from now, we have to start our working, our planning from now. Though I know our phone is totally tapped, not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaramji because my phone will be tapped. Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawarji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri, spying, beating, killing, and talking too much, doing nothing. Petrol price, diesel price, petroleum products, 3.7 lakh crores. Government of India collected 3.7 lakh crores from the public pocket. And where they are spending this money? The people are not getting even vaccine, medicine. Where is the PM Care Fund? Who is taking care for that? And now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया. क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है. हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा. देश को बर्बादी हो जाएगा. किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाচ্ছে না. Even central government, I am sorry to say, your ministers, their phone is also blocked. स्पाईगिरी चल रहा है. मिनिस्टारेर फोन पेगासास ढुके গেছে. অফিসারদের ফোন Pegasus captured. All leaders' phone Pegasus captured. All judges' phone, maximum judges' phone is also captured. Now, গণতন্ত্রের তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ডেমোক্রেসি. If we love our democracy, our founding father, they strong our democracy, and India is one of the largest democracies in the world. But now, because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy, they have finished the federal structure. They have finished the democratic rights. Three main pillars in democracy. One is election, means democracy. Two, media. And three is judiciary. Now your Pegasus captured election process, captured judiciary, captured the political party leaders, captured the media houses. Now, whatever you will say, every institution has to do it.
Otherwise, you will show them, you will blackmail them with Pegasus, to ferocious, to dangerous. सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं आप, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। কোভিড নিয়ে দেশকে শেষ করে দিয়েছে। সেকেন্ড কোভিড কাউকে বুঝতে দেওয়ার আগেই 4 লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। কোভিডে ভ্যাকসিন নেই, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं, उसको बाद मरने के बाद क्रिमेशन भी नहीं करने देता है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देता है, মৃতদেহকে সম্মান পর্যন্ত জানাতে দাও না তোমরা। সমস্ত ডেড বডিগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছো। কখনো বিহার তুলেছে, কখনো বাংলা তুলেছে। আমরা তাদের আবার সসম্মানে हम लोगों ने डेड बॉडी को जब हमारा बंगाल में आया तो हम उसको क्रिमेशन का बंदोबस्त किया। ये हमारा थोड़ा ही काम है, आपका यूपी का काम था, आपने नहीं किया, लेकिन आप बड़ा बड़ा बात करते हैं। तो आज देश में क्या है, कोविड में आपका फेलियर मोन्यूमेंटल फेलियर है।